Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Congratulations to proud Canadians. As Honorable Member of Parliament has said, give importance to the children. I'm so happy there's so many kids are coming up and delivering the speech, and we should give respect to them. And ladies and gentlemen, this is Canada. We have the right, whatever religion we have the right, whatever we wear, we have the right, whatever we speak. So if your kids, if you are from the Hindi or Urdu background, there is no harm, and don't feel shy. Talk to them in their own language so they know their background. Before I have written a poem, a tarana on Canada in Urdu language. But before I give you the highlights of that, I would like to recite one of my poems which I had written on Urdu, just to motivate the parents so they can speak in Urdu with their children. And the title is Urdu. उर्दू के चाहने वालों से कुछ आज मुझे भी कहना है, बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू ना हिंदुस्तानी है, उर्दू ना पाकिस्तानी है, उर्दू की सरहद कोई नहीं, जग में जानी पहचानी है। ये मदरसों का काम नहीं, कुछ काम हमें भी करना है, बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू ना इलाहाबादी है, उर्दू ना हैदराबादी है, उर्दू तो मीठी मीठी है, उर्दू तो सीधी सादी है, उर्दू हर घर की बेटी है, उर्दू हर घर का कहना है, बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। और उर्दू है बोली लश्कर की, उर्दू है बोली हर घर की, उर्दू है बोली लश्कर की, उर्दू है बोली हर घर की, उर्दू बोली हम सारों की, जागीर नहीं सरदारों की, ये बोली है दहकानों की, खलियानों और ऐवानों की, ये बोली है चौराहों की, पगडंडी और शाहराहों की, ये साओं की रंगत वालों की और गोरी गोरी बाहों की। उर्दू है हमारी माओं की और ठंडी ठंडी छाओं की। उर्दू में ब्रदर भैया है, उर्दू में सिस्टर बहना है, बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना। Now, ladies and gentlemen, this is Canada, and I have written, can say that the anthem in Urdu. Very famous singers, Shobha and Shagufta Awan, they are here. But I just want to give you the highlights, what I have covered in Urdu. And you just see, I have covered peaceful environment of Canada. I have covered respectful immigration to Canada. I have covered equal opportunities in Canada, as the Member of Parliament saying there's the land of opportunities. I agree with you, and I am appreciating and thanking Canada for giving us a pleasant weather. Center of Arts and Culture, Ontario, it has been given to us. We are thankful to Canada. Free health and education, non-discrimination to race and religion. Now these ladies, great singers, will be coming and they will be singing this Urdu poem what I have written, and you please evaluate how much I was successful. Thank you very much.